Hello everyone, myself Mrs. Rama Ranjankar, lecturer in Electronics and Telecommunication from Praveen Patel College of Diploma Engineering and Technology, Bhinder. Now I am going to explain practical number 4 of PEC. So name for practical number 4 is measurement of AM wave modulation index. Okay. Now here I show the diagram waveforms for amplitude wave. Now here we have to calculate the modulation index. So the formula for modulation index is V max plus V mean upon V max minus V mean. Okay. So by calculating the V max. So generally we calculate the V max from the center line to peak voltage of amplitude modulated signal. Similarly we calculate the V mean from lowest region, मतलब यहाँ पे हम लोग V mean calculate करेंगे. So from center line to minimum portion of this amplitude modulation index. Okay. Now these are the circuit connections. Now the circuit connections may now these connections are same as that of practical number 3. So this left hand side जो है, so this is for AM modulator. So AM modulator को first input जो है that is a modulating signal. So यहाँ पे आपको modulating signal जो है वो show हो रहा है, देखा है यहाँ पे modulating input. So modulating input is applied from the sine wave generator. So generally it is a sine wave in nature. Now this is ground. Another one is a carrier input. So we apply the carrier inputs from the carrier side. So carrier input is there. Now we are going to calculate the modulating signal. Modulating signal input हमें CRO पे देखना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है. सपोज आपको अगर कैरियर वेव शो करना है, देखना है, देन यू कनेक्ट CRO चैनल 1 इनपुट या चैनल 2 इनपुट टू दिस नॉब so that we obtain the carrier wave signal. Now at the output side two knobs are there. One is a AM output and another one is a ground. So channel 2 पे हम लोग AM modulated output देखेंगे. So channel 2 is connected to TP टेस्ट पॉइंट जो अवेलेबल किया है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे एंड चैनल 2 का ग्राउंड जो है दैट इज़ कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल. ओके. सो CRO पे आउटपुट जो है वो शो हो रहा है, जैसे कि लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने शो किया था कि दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. सो ये जो साइन वेव, सिंपल साइन वेव दिख रहा है वो है आपका एम्पलीट्यूड नॉर्मल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. So if this modulating signal is superimposed with a carrier signal, then it generates a amplitude modulated signal like second waveform जो शो हो रहा है, this is a second waveform. So ये waveform आपका जो शो हो रहा है this is amplitude modulated signal. और simple sine wave जो दिख रहा है वो है आपका modulating signal. So there is a difference between the modulating signal and modulated signal. When the modulating signal mixed with the carrier signal, high frequency signal, then the signal generated called as amplitude modulated signal. तो second जो है वो आपका amplitude modulated signal है. Now we are going to calculate, हमें calculate करना है modulation index. So modulation index का formula है percentage modulation is equal to V max minus V mean upon V max plus V mean. Percentage है, so that we calculate or it is multiplied by 100. Okay. Modulation factor is calculated as V max minus V mean upon V max plus V mean. Okay. So now we are going to calculate these two parameters using CRO waveform. Calculate करेंगे. So V max और V mean हमें जो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का कैलकुलेट करना है. सो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको मैं हाइड कर देती हूँ और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को मैंने सेट किया. नाउ वी मैक्स हम लोग जो कैलकुलेट करें, सो वी आर कैलकुलेटिंग दिस वी मैक्स फ्रॉम सेंटर लाइन टू
अपर पोर्शन. तो सेंटर लाइन टू अपर पोर्शन में हाउ मेनी डिजिट्स आर कवर्ड, that we have to check, and that is multiplied with this amplitude knob. Okay, so how many digits are covered? So you calculate. So one block is completely, and next is 3 digits are covered by of second block. So हो गया आपका टोटल 1 ब्लॉक है तो 1 होल्ड हो गया, एंड 3 डिजिट्स ऑफ सेकंड ब्लॉक है, सो हो गए 0.6. सो 1.6 इंटू वोल्टेज कहाँ पे सेट है, वोल्टेज जो सेट है वो वोल्टेज सेट है 2 पे. सो 1.6 इंटू 2 वोल्ट, दिस इज वोल्ट है. सो 1.6 इंटू 2 वोल्ट. सो ओके, सो वो हो गया आपका 3.2 वोल्ट. So my Vmax is equal to 3.2 volt. So now I put this Vmax value. Vmax value is equal to 3.2 volt. Okay, minus again you put the value for Vmin. Vmin calculate करना है. So for Vmin again you calculate the we see this envelope. So for this envelope we are calculating from the center line. So how many digits are covered? Only 1 digit is covered. So for 1 digit how many digits are covered? 2 digits are covered. So 2 digit मतलब 0.4 into 2, so 0.8. Okay, so I put this reading as 0.8. So 3.2 minus 0.8 volt. Okay, so that I put. Now you calculate the remaining calculation. You write 3.2 volt plus 0.8 volt. In this way you calculate. By calculating this factor we obtain the modulation factor. और अगर percentage modulation calculate करना है then multiply with 100. Okay, so here the practical number 4 is over. That is calculation of modulation factor. Thank you.